हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो मैं हूं अमिताभ और मैं करता हूं स्टॉक मार्केट को सिंप्लीफाई आपके लिए। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमें किस तरीके के बिजनेसेस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कमोडिटी टाइप बिजनेसेस में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ट्रैकिंग बहुत करनी पड़ती है, बट आज मैं एक एग्जांपल लूँगा एक ऐसे बिजनेस का जिसमें कि हमें ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं करनी पड़े। और किसी बिजनेस को ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं करने का मतलब ये है कि वो बिजनेस इतना रोबस्ट होना चाहिए, उस बिजनेस में एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज होना चाहिए, एक मोट होना चाहिए, ताकि उस कंपनी के जो प्रोडक्ट के यूज़र हैं, जो उस कंपनी का जो क्लाइंट है, वो उसको बार बार चेंज ना करे। तो दे हैव टू मेक समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंट का एक सब्स्टिट्यूट वर्ड होता है क्रिटिकल। सो आई विल फोकस ऑन दिस वर्ड टुडे कि हमें कुछ ऐसे बिजनेस को पिक करना चाहिए किसी, अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जहाँ पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहते हैं, अपना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो ट्रैक दोज बिजनेसेस की इस पे क्या हुआ, 3 महीने में क्या हुआ, कौन कॉल में क्या हुआ, एंड ऑल दोस थिंग्स। इफ यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी, देन यू हैव टू पिक द बिजनेसेस विच आर डूइंग समथिंग क्रिटिकल। पिछले 2 सालों से हम लोग पावर ट्रांसमिशन सेक्टर को कवर कर रहे हैं, और ट्रांसमिशन सेक्टर itself is a critical sector for India's GDP growth. So इस क्रिटिकल सेक्टर में एक सब सेगमेंट है जो बहुत ही क्रिटिकल है, और वो सेक्टर है ट्रांसफार्मर बुशिंग्स का। सो ट्रांसमिशन का क्रिटिकल पार्ट है ट्रांसफार्मर का क्रिटिकल पार्ट है ट्रांसफार्मर बुशिंग्स। तो हमने कुछ दिनों पहले एक ऐसे बिजनेस को आइडेंटिफाई किया था और हमने उस पर डिटेल एनालिसिस भी की थी। मैंने उसे प्रेजेंट भी किया था आपके साथ। बिजनेस का नाम है यश हाई वोल्टेज। इसका कंप्लीट वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। बट द मेंटल मॉडल आई एम पुटिंग अप हियर इन फ्रंट ऑफ यू कि जब भी आप किसी बिजनेस को एनालाइज करें तो सिर्फ नंबर ना देखें, बिजनेस एनालिसिस करें। बिकॉज बिजनेस को आप एनालाइज करेंगे तो आप 2 चीज़ें पकड़ पाएंगे, सेक्टर सही है या नहीं ये आप डिसाइड कर पाएंगे, और प्रोडक्ट सही है या नहीं ये आप डिसाइड कर पाएंगे। तो सेक्टर के बारे में तो मैंने बहुत बातें की हैं, ट्रांसमिशन के बारे में। आज हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। यश हाई वोल्टेज ने जो प्रोडक्ट डेवलप किया था, जिसकी बेसिस पर हमने थीसिस बनाई थी, वो थीसिस किस हद तक प्ले आउट हुई है। और हमने इस पे आज से 8 महीने पहले वीडियो बनाया था, जो जब इस कंपनी की मार्केट कैप कुछ 500 करोड़ के आसपास थी। अभी ये कंपनी अराउंड 1400-1500 मार्केट कैप पे बैठी हुई है। तो यहाँ से क्या पॉसिबिलिटीज़ है कंपनी के ग्रोथ के? क्या इन कंपनी की ग्रोथ मैच्योर हो गई है, या कंपनी के लिए स्टिल देयर इज अ रूम फॉर द कंपनी टू ग्रो, टू डू बेटर? कंपनी का माइंडसेट क्या है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में सीखेंगे। और कंपनी की जो प्लान थी, जो हमने थीसिस में डाली थी, जो चीज़ें क्रिटिकल कोर कंपोनेंट जो थे, 3 कंपोनेंट थे हमारे, वो तीनों कंपोनेंट पे कंपनी ने पिछले 6 महीने में कैसा परफॉर्म किया है। बिकॉज H1 के रिजल्ट आ गए हैं और H1 के रिजल्ट बहुत ही धमाकेदार हैं। सो इस कंपनी का H1 रिजल्ट भी डिस्कस करेंगे, कंपनी की रोड मैप डिस्कस करेंगे, और हम इसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं। क्वालिटेटिवली मैं आपसे बात करूंगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन। और हमारा मानना ये है कि अगर आप क्वालिटी बिजनेस में सही टाइम पे अगर एंट्री कर लेते हैं, देन आई थिंक एवरीथिंग इज सॉर्टेड। सो यू नीड टू बी राइट, यू नीड टू बी अर्ली, एंड दैट्स व्हाट मी एज ए इन्वेस्टर आई एम ट्राइंग टू डू। एंड लेट्स गेट इन डीपली इनटू यश हाई वोल्टेज H1 FY26 numbers first, and I'll start with a brief overview. जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है पुराना, उनके लिए क्विक ओवरव्यू होगा। H1 के नंबर होंगे और उन्होंने अभी कैसा किया ऑपरेशनली, और गोइंग अहेड कहाँ दिखती है हमें जर्नी, मार्केट में क्या हो रहा है, और इस ट्रांसफार्मर बुशिंग सेगमेंट में क्या हो रहा है, ये भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले इस कंपनी की ओवरव्यू देखते हैं। ये कंपनी यश हाई वोल्टेज, इट हैज इमर्ज्ड एज अ प्रीमियर मैन्युफैक्चरर ऑफ OIP एंड RIP बुशिंग्स। बुशिंग्स जो होते हैं वो क्रिटिकल पार्ट ऑफ अ ट्रांसफार्मर होते हैं। तो कंपनी के पास एक प्रोडक्ट जो है वो काफी एक्सलेंट कहा जा सकता है, बिकॉज दे मेक वेरी गुड क्वालिटी प्रोड्यूस। And also this company is having a MNC mindset, because this company has always maintained relationship with European vendors, with European customers, and also into USA they have opened a sales office. So this company is a good high quality product company with a export mindset. हालांकि export का number अभी सिर्फ 5% का है, but with new product expansion, with new product mix, they are expected to increase this number from 5 to a higher number with a focus on USA and
European market. And this company seems to have a strategic vision to become top 5 global transformer bushing company. And they have a good clientele including NTPC, Power Grid and Siemens, which is a very quality MNC itself. They are backed by global certification as well. अब इसके प्रोडक्ट को हम क्विकली समराइज करते हैं तो they are into oil impregnated paper bushings, they are into RIP, resin impregnated paper bushings, which is a higher version, which is a good quality version of paper bushings. So OIP is the basic layer and RIP is the advanced layer, RIP or RIS. The company has done the huge capex of 100 crore in a greenfield expansion where they are getting a Swiss technology, और उसके लिए ये company is poised to do well in terms of product expansion. They also have a product which is used for high current bushings. High current bushings वहाँ यूज होते हैं जहाँ पे हम पावर जनरेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोलर पावर प्लांट में हाई करंट बुशिंग्स यूज होती हैं जहाँ पे हाई करंट अप टू 25,000 एम्पियर का करंट अगर किसी ट्रांसफार्मर में जाए और वो क्रैक ना हो, इस टाइप के ट्रांसफार्मर अगर किसी को चाहिए तो दे नीड टू कम टू यश हाई वोल्टेज बिकॉज दे सीम्स टू बी ओनली सीरियस प्लेयर इन टू दिस काइंड ऑफ गेम. बट आई थिंक दैट मार्केट इज नॉट अ ह्यूज मार्केट. मेन मार्केट इज RIP और RIS bushings because this market is going to be part of the grid modernization project because extra high voltage पे अब चीजें आ गई हैं. तो हाई वोल्टेज में थे ऑलरेडी अप टू 250 kV इनके प्रोडक्ट थे, बट नाउ दे हैव विद दिस ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन दे आर गेटिंग इनटू अ न्यू लीग एंड दैट इज 550 किलोवोल्ट ऑफ RIP बुशिंग्स, जहां पे अभी फिलहाल वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड हिताची इज नॉट प्रेजेंट, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ इंडिया में उनका बेस नहीं है. दे इंपोर्ट दीज इफ दे रिक्वायर दैट फॉर देयर प्रोजेक्ट्स. सो RIP बुशिंग्स में 550 किलोवोल्ट इज अ रेंज व्हिच हैज नॉट बीन अटेन्ड बाय मेनी. वेरी फ्यू कंपनीज आर डूइंग इट इनसाइड इंडिया. एंड यश हाई वोल्टेज की पोजिशनिंग रेट्रोफिट मार्केट में भी है क्योंकि इफ यू टॉक अबाउट इट्स peers like Hitachi and Siemens and ABB, they are very high-handed players. They don't do retrofitting. But this guy is a small, nimble-footed company, and that's why they work with all kinds of bushings. So they don't have any qualms, they don't have any doubt कि चलो Hitachi की bushings लगी हुई है उसको replace करना है, तो they go and they do kind of replacement job also. So which is a kind of a service-oriented mindset I'm talking about. हमारा जो साधन का investment thesis जो हमने जनवरी में वीडियो रिलीज किया था उसमें 3 core features थे, 3 pillars थे. First pillar was market leadership. This company is commanding a 30 to 35% domestic market in a highly protected industry, and they have a technical expertise required to cater to a multi-year cycle, or their product cycle is also improving. Now the second leg is their capacity, which is going to be around 2 to 3x in terms of volume, but in value terms it will expand very big because they are getting into RIP bushings. OIP bushings already वो बना रहे थे, RIP bushings वो स्विट्जरलैंड के हेल्प से बना रहे थे, but now they are going to make everything make in India into their new plant which will be live in FY27. So यहाँ पे और जो प्रोडक्ट एक्सपेंशन हो रहा है उससे 10,000 करोड़ जो टाइम था वो बढ़ करके 16,000 करोड़ टाइम होने वाला है. Also this company has a mindset of a MNC. They want to export from India. That's a global expansionary mindset. That's what we liked about this company. H1 में अगर आप नंबर क्विकली देखते हैं तो टॉप लाइन में 78% का ग्रोथ हुआ है, 57 करोड़ से 102 करोड़ का जंप हुआ है. EBITDA में ग्रोथ जो है वो भी 110% का है, डबल ग्रोथ हुआ है EBITDA में भी 11 करोड़ to 23 करोड़. वहीं प्रॉफिटेबिलिटी द कंपनी हैज ग्रोन प्रॉफिटेबली फ्रॉम 6 करोड़ to 14 करोड़. So again 120% kind of jump. Margin has also expanded around 250 basis point in bottom line, and EBITDA margin has expanded by 340 basis point. So it's a good margin. So this is a proof of the pudding that the company is moving from OIP to RIP. So this margin improvement is driven by 2 factors. One is the better product mix, likely with higher shares of high margin RIP bushings and exports. Secondly, the company is generating a strong operating leverage as the volumes are expanding, so costs are going low. That's why the efficiency is coming into picture. That's why the margins are the company is doing better margin. Company का guidance भी है कि they will do 22 to 23% of EBITDA margin going forward. In summary, this company has presence into more than 60 plus countries, and their main financial strength is they are efficient into working capital management. Balance sheet is also clean. Their debt equity is also under control. Cash flow generation is also healthy. Operational efficiency is also visible with optimal receivable collection, and their return on capital employed
provide is also increasing, which is demonstrating value creation by the management. On this note, I would like you to say that I have started Sadhan Mentorship Program, which is going to be live in December second half. So do check out the link in the description where you can get a detailed overview of the mentorship program, where I am passing on whatever I've learned over last 20 years in corporate world and capital markets. I started as a financial analyst into project finance into ICICI Bank way back in 2011. So since then, 14 years of financial analysis I have done. So I understand the businesses very closely, and I'm going to partake with whatever I've learned while working with banks, with NBFCs. And since last 5 years, I have been running a channel, Sadhan. So वहाँ पे I've developed a community. So I get lots more input from the market. तो वो learning को भी आपके साथ में share करना चाहता हूँ. So if you want to serious about learning investment, then you have the opportunity to get it live from me on weekends. In Sadhan Mentorship Program, you'll get live interactive classes over 25 weekend, so that you can master the Multibagger framework, which we have mastered over last 10 years. This learning process would be accelerated, so you will not lose time to catch up with the expert level understanding of the market. You will have a community Q&A as well as you can ask me anything. You can visit learn.amitabhvatsya.com and register yourself. So do check out the link in description. And so अगर हम टाइमलाइन देखें तो H2 FY26 में गोइंग अहेड क्या होगा कि सिविल कंस्ट्रक्शन इज ऑलरेडी स्टार्टेड. सिविल कंस्ट्रक्शन पे वो काम कर रहे हैं. मार्च 2026 तक ट्रायल प्रोडक्शन स्टेज में चले जाएंगे और H2 FY27 में रियल गेम विल स्टार्ट व्हेन दे विल लॉन्च द फुल स्केल प्रोडक्शन फॉर प्रोडक्ट्स व्हिच आर गोइंग टू सर्व नेशनल ग्रिड एंड यूटिलिटी मेगा प्रोजेक्ट्स. सो मार्केट एक्सपेंशन का इम्पैक्ट ये होगा कि ये 250 किलोवाट से बढ़कर के 550 किलोवाट का रेंज, जो कि 60% बड़ा मार्केट है, उसमें वो एंटर कर जाएंगे. सो दिस टाइम एक्सप्लोजन इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ द थीसिस व्हिच वी आर थिंकिंग, एंड द कंपनी हैज सेड दैट दे विल कीप ग्रोइंग फॉर नेक्स्ट 5-6 years. So we can see a 5-7 years growth period, growth cycle for this company, because company is not just placed for a 1-2 year kind of growth, because उनका 1.5 साल में तो वो कैपेक्स ही कर रहे हैं, 1 से 1.5 साल में. सो इट्स गोइंग टू बी लॉन्ग साइकिल थिंग. ग्लोबल एक्सपेंशन के बारे में मैंने बताया. यूएसए में सेल्स ऑफिस खोल दिया उन्होंने. यूरोपियन पार्टनरशिप किया है विद अ जर्मन कंपनी कॉल्ड वीडमैन, एंड इलेक्ट्रोलिंक इज अ यूके बेस्ड टेक्नोलॉजी पार्टनर. उनके साथ भी ये लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट ये बेच रहे हैं. सो ये करने का पर्पस ये है कि मार्केट में लोग इन्हें जान जाए. अभी ये उनके प्रोडक्ट को लेकर के बेच रहे हैं. सो सेल्स एबिलिटी इनकी आ रही है, साथ ही साथ वो चैनल बिल्डअप कर रहे हैं, सो दैट व्हेन दे लॉन्च देयर ओन प्रोडक्ट देन इट कैन रीच डायरेक्टली टू द कस्टमर. सो फिलहाल दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग अदर प्रोडक्ट्स ऑफ गुड कंपनीज टू create a space for themselves for their futuristic products. From 5% of export baseline, they want to grow in export using their high margin RIP products. अगर हम overall sector की बात करें तो global market size of transformer bushing is 25,000 crore. This long-term growth rate of this segment is 5.5%. And this is led by grid modernization, data center investments, renewable integrations, and higher electricity uses through EV and penetration of EV, battery, BESS, everything leads to more requirement of transformer bushings. So global competition इनके कौन कौन से हैं? Hitachi है, GE है, Siemens है, all big threes are their competition, and locally Crompton Greaves is their competition. Also they have their niche is that they are non-MNC player, and they use a rare indigenous technology which has been developed in sync with a Swiss technology partner. And with this Make in India force, they can compete with MNCs because they will be more profitable. Although they will not be able to charge their product as high as Hitachi's, but still if they take a little bit of lower realization, still their costs are lower, so they will be able to do really well. They will be able to maintain their market share into global market. So this is the brief thesis, and आप जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा. See you in the comment. Thanks for liking our work.